Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the environmental classes. Today's class is for the 12th, and we have started the chapter 5, unit 5, that is biodiversity management. Biodiversity management. Now we will study what is biodiversity and what are and its levels. Life on this earth was constantly evolved for last 4 million years to form the present spectacular richness of living world. The current popular term for this richness and diversity of life is biodiversity or the biological diversity. Biodiversity means the wealth of life forms found on earth in the form of millions of different plants, animals, and the microorganisms. Biodiversity simply means variety of living species of organisms of both plants and animals. Communities in an ecosystem having certain specific environmental conditions and larger spatial scale, such as tropical rainforests ecosystem, savanna ecosystem, temperature grassland ecosystem. Biodiversity may also be defined as the intrinsically inbuilt plus the externally imposed variety in and among the living organisms existing in terrestrial, marine, and other ecosystems at specific period of time. The diversity includes the availability in the genes, genotypes, species, and ecosystem at a specific region, at a specific time period. Based on the elements of biodiversity, it is divided into the following three types. Number one is genetic biodiversity. It represents the diversity of genes which make up the germplasm of the species population. In fact, the gene diversity determines the difference in the species and the degrees of species. Difference determines the levels of biodiversity, richness, or the poorness. Species biodiversity. Species biodiversity simply means variety and the variability of species or biological communities. That's plants, animals, and the microorganisms of a given ecosystem. This species diversity enhances the borders of the biodiversity as it includes the variability existing within the species and the interactions rampant among them. Ecosystem biodiversity. The diversity existing among the various ecosystems in a region constitute the ecosystem biodiversity. Since the ecosystem determines the variety of habitat and the niches for the biological communities, biological processes operating at each natural ecosystem, all of which in turn determine the variety and the number of the species in the different ecosystems. तो इस तरह से आज हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो लाइफ है ऑन द अर्थ है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं प्रेजेंट स्टेट में आने के लिए। बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब होता है, इट मीन्स ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ की ये जो ज़मीन है, इसमें कितने बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स ए वैरायटी ऑफ species of organisms, both plants and the animals, communities in an ecosystem having certain specific environmental conditions and a larger spatial scale, such as a tropical rainforest ecosystem, savanna ecosystem, temperature, grassland ecosystem. या इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड एज द intrinsically inbuilt plus the externally imposed variability in and around the living organ existing in the terrestrial, marine, and other ecosystem at a specific period of time. कि ये जो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या जगह पे रहते हैं, जिसमें ख़ास किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, जिन कंडीशन में वो रहते हैं, तो इसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। इसमें आती हैं टेरेस्ट्रियल आती हैं या मैराइन इकोसिस्टम्स आते हैं, या इसी तरह से
अदर इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम आते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बहुत सारे हैं। तो इनमें जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है या प्लांट्स हैं या बाकी स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो इनमें क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, तो कुल ये सब मिला के उस एरिया में उस एरिया को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। अब जो ये बायोडाइवर्सिटी, इसमें 3 किस्म होते हैं। एक तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होती है। ये जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, इट मीन्स द डाइवर्सिटी इन द जीन्स विच मेक अप द जर्म प्लान ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन। कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स ही ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर जीन्स अच्छे होते, जो नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन वो भी अच्छी होगी। तो इसको क्या, जब इसमें वैरायटी होगी, डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ एनिमल्स होगी, डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ जीन्स होगी, तो इसमें डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी होंगे या प्लांट्स भी होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। फिर होती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। Species biodiversity simply means the variety and variability of species of a biological community. Biological community में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें जब डिफरेंट स्पीसीज होती है उसको कहते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से होते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब आपको पता है कि इकोसिस्टम होती है इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इसमें भी बायोडाइवर्सिटी होती है। मतलब बहुत सारे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, मैराइन इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या एक्वाटिक, बहुत सारे, या डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो ये जो इकोसिस्टम, डिफरेंट किस्म के इकोसिस्टम्स हमारे अर्थ पे मौजूद है, इसको कहते हैं इको बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।